Hello students, how are you all? I hope you all are enjoying your online classes given by our esteemed institution. So today we will discuss a grammar topic, sentence. I know you have already done the same topic in your previous class, but in this video we will cover some more topics related to the same topic. So today we will cover what is sentence, subject and predicate, characteristics of sentence, what is attribute, adverbial qualification, object. Object always include two objects. First one is direct object, second one is indirect object. Next one is object complement, then subject complement, then verb. So let's get start the same topic in detail. Okay. So students, what is sentence? You already know that sentence is a group of words that convey a complete sense. Means sentence is actually not a single word. It is actually a group of words that convey you a complete sense. जिससे किसी सेंस का मीनिंग निकलता हो, जिससे कोई मीनिंग निकले. That is called the group of words. Suppose I have an example. A is Ram and boy honest. Do these words convey a meaning to you? Yes or no? No. Is Ram and boy honest? These are also a group of words, but it doesn't convey a complete sense. यहाँ पर हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो गिवन है, लेकिन इनसे हमें कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है. तो वी शुड कॉल इट फ्रेज. जिन सेंटेंस का, जिन वर्ड्स का कोई भी मीनिंग ना निकले, उनको हम क्या बोलते हैं? phrases. Now let's come to the another example. Ram is an honest boy. Ram is an honest boy. In this sentence, group of words are there. Ram is a word, and is also a word. Honest boy, these are also word. And these words actually convey a complete sense. इनसे हमें कोई ना कोई meaning निकल रहा है. तो this is called a sentence. Right? Now, characteristics of a sentence. कि what should be including in a sentence. First one is a sentence should also include a subject and a verb. किसी भी sentence में एक subject and verb होना बहुत जरूरी होता है. Second, complete thought or idea. It always convey us a complete thought or idea. For example, the sky is blue. The sky is blue. It definitely give us a complete thought that the color of the sky is blue. Clear? Third one is meaning. Always keep this thing in your mind that a sentence always convey a meaning, whether it is a statement, question, command or exclamation. Clear? Fourth one, a sentence always start with a capital letter and ends with a full stop, question mark or exclamatory mark. Clear? Now let's talk about what is subject. The person or thing talked about is called subject. The person or thing talked about is called subject. And what is predicate? Whatever is said about that person or thing is called the predicate. Whatever is said about that person or thing is called the predicate, and it always include verb. For example, Ram sings a song. So here Ram is a subject. Ram is a subject because Ram is a person we talked about. Clear? And the predicate sings a songs. Predicates means whatever is said about Ram is called predicate. Clear? And it always includes verb. Predicate में हमेशा verb include होती है, ना कि subject में include होती है. Second, Sita writes a letter. So Sita is here subject, and what is she doing? Writes a letter. So this one is your predicate. So next example is, an old man is lying on the coat. An is your determiner, old is adjective, and man is your noun. Clear? An old man lying is
on the coat. An old man is your subject. Is lying on the coat is your predicate and it also include a verb. Clear? Second है the green shirt is very cheap. The green shirt is your subject. The is your determiner. Green your adjective and shirt is a noun. Is very cheap is your predicate. Next one topic is your attribute. What is attribute actually? The adjective or the adjective phrase that qualifies the subject word in a sentence is called the attribute. Actually attribute क्या होता है? Suppose ये हमारा man जो है हमारा क्या है? Subject है. जो words subjects को qualify करते हैं, subject के अंदर कुछ additional information देते हैं, उसके adjective को आपको mention करते हैं. These words are called attribute. For example, इस एग्जाम्पल में an old man, man is your subject and these words an old is added to qualify the noun. man के अंदर कुछ और एडिशनल एडजेक्टिव उसके क्वालिफाई को उसको क्वालिफाई कर रहा है और वो क्या है? ओल्ड. क्लियर? an old is your attribute. man is your subject, man is your subject word, but an and old is your attribute. The green shirt is very cheap. Shirt is your noun, shirt is your subject. And what additional information given about that shirt? That the green. So the green is your attribute. Clear? Next topic is your adverbial qualification. An adverb or an adverb phrase that qualifies the verb is called the adverbial qualification. अगर किसी वर्ब के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो जाते हैं जो आपकी वर्ब को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं, उसको और एडिशनल में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्बियल क्वालिफिकेशन. फॉर एग्जांपल रवि रन्स फास्ट. तो रवि इज योर सब्जेक्ट, रन्स इज योर वर्ब. फास्ट रन के अंदर कुछ एडिशनल ऐड किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को ऐड कर रहा है. वर्ब के अंदर कुछ और ऐड किया जा रहा है और वो क्या है? फास्ट. तो फास्ट हमारा क्या होगा? एडवर्बियल qualification. Right? We ran all the way. We means subject, ran here verb, all the way. All the way actually given extra information about the verb. So this is all the way is your adverbial qualification. Now comes to the another point, that is object. Actually what is object? The person or thing that receives the action of the verb. The person or thing that receives the action of the verb is called the object of the verb. Object are of two types. First one is direct object. Second one is indirect object. अब direct object क्या होता है? Suppose I have written here Sarita is reading a book. तो Sarita is here your subject. Is reading is your verb and what is a book? A book is your object because book is a thing that receives the action of the verb. Book is a thing that receives the action of the verb. So it is a object. Now comes to the point, what is direct object? Direct object में क्या होगा? Sarita is reading a book. कि whenever we have any sentence and we want to know which type of object is this, we always asking the question who or what after verb. जब भी हमें किसी सेंटेंस में ये फाइंड आउट करना हो कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा वर्ब के बाद आपको who और what लगा के क्या करना है? क्वेश्चन पुट करना है. एंड what आंसर यू रिसीव फ्रॉम दिस? दिस इज ऑलवेज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Sarita is reading what? Sarita is reading what? You receive answer a book. So a book is your object. Clear? Next, second is indirect object. Suppose I have example. Sarita is making tea for her guest. Right? Sarita is making what? I put what after immediately verb. Sarita is making what? You got the answer tea. So tea is your direct object.
And another question, Sarita is making tea for whom? Sarita is making a tea for whom? किसके लिए बना रही है? Then you will get an answer for her guest. तो for her guest is your indirect object. Clear? Object are of two types: direct object, indirect object. Direct object identify by asking the question who or what after immediately verb, and indirect object asking by question whom after the verb. Clear? Next come to another point, that is verb. Yes, as you know, what is verb? All the action words are called verb. Suppose sleeping, running, studying, bathing, these all are verb. So first one is your verbs are also two types: transitive verb and intransitive verb. First one is transitive verb. What is transitive verb? When a verb requires an object to receive its action is called transitive verb. जब किसी भी वर्ब को कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए अगर उसको एक ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है, दैट वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. सपोज द लिटिल डॉग इज चेजिंग अ रैट. ठीक है, द लिटिल डॉग इज चेजिंग अ रैट. टू आइडेंटिफाई द वर्ब वी ऑलवेज पुट व्हाट और whom with the verb. The little dog is chasing a rat. The little dog is chasing what? Chasing is your verb. The little dog is your subject. The little dog is chasing what? What? Your question is not completed. आपको भी कुछ ना कुछ और चाहिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए. The little dog is chasing a rat. You require a rat. A rat is your object. When a verb requires an object to receive its action is called transitive verb. तो यहाँ पे जो is chasing is your transitive verb. Second verb is intransitive verb. A verb whose meaning is complete without an object is called intransitive verb. For example, the rat is running away as fast as possible. The rat is running away as fast as possible. The rat is your subject. Is running is your verb. Clear? The rat is running. The rat is running whom? The rat is running what? The rat is running whom? किसका पीछा कर रहा है? किसके पीछे भाग रहा है वो? No need to add any another words to complete the meaning of this sentence. It is completely by itself. The rat is running. It is also a sentence. Subject is here, verb is here, and its object is also given with the verb. So no need to add some extra words to complete the meaning of the sentence. हमें द रैट इज़ रनिंग इज़ ऑल्सो अ फुल सेंटेंस. इसके अंदर हमें इसका मीनिंग निकल रहा है इस वर्ब का. हमें इसके साथ कुछ भी एडिशन वर्ड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है. हमें इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करने की नीड नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. बट इन द सेम सेंटेंस द लिटिल डॉग इज चेजिंग, आवर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. वी नीड सम अदर वर्ड्स टू मेक इट मीनिंगफुल. The little dog is chasing a rat. By adding a rat, our sentence is completed. So this is called transitive verb and this is called Now, our next topic is complement. What is actually complement? Complement is a word or a group of words which are required to make the sentence complete and meaningful. Okay, it can be for subject or it can be for object. So complement are two types. First one is object complement, second one is subject complement. First one is object complement. What is this?
a word or a group of words that complete the sense of predicate. A word or a group of words that complete the sense of predicate and tells us more about the object of the verb. For example, we have mom seems. Mom seems what? Mom is a subject. Seems is a your verb. Mom seems what? Subject is your sentence is incomplete. It means you need some more word or words to make this sentence meaningful. Mom seems what? Next sentence. Mom seems happy. Now we add here happy words to make this verb meaningful, to complete the sense of the verb. तो we should call it object complement, because यहाँ पर जो happy है वो आपका predicate का काम कर रहा है और वो verb को क्या कर रहा है? complete कर रहा है वो. ठीक है. Mom is a subject, seems is your verb and happy is your predicate. Clear? Second one is Jen named her daughter. Jen is a subject, named is your verb. Jane named her daughter what? Jane ने अपनी बेटी को क्या नाम दिया? The sentence is not completed. We want some more words to make the sentence meaningful. It means we should add here to complete the sense of the verb. So Jen named her daughter Jenny. So when we add here Jenny, the sentence is completely meaningful. Jen is a different person. Jenny is also a different person. जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट पर्सन्स हो तो वहाँ पे हमारा कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? another next one is your subject complement. A word or a group of words that is required to complete the sense of a verb and tells us something about the subject of the verb. Understood it clearly, बच्चे? A word or a group of words that is required to complete the sense of a verb and tells us something about subject. यहाँ पे मैंने आपको क्या बता रही हूँ कि कंप्लीट सेंस करना है हमें वर्ब के साथ ऐड करके, लेकिन वो जो वर्ड है दैट इज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना हुआ होना चाहिए, ना कि वर्ब के लिए. इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. एग्जाम्पल देखो, मीरा इज अ डॉक्टर. मीरा इज हेयर सब्जेक्ट. मीरा इज व्हाट? मीरा इज व्हाट? क्या है मीरा? मीरा इज अ डॉक्टर. सो मीरा ए डॉक्टर एंड डॉक्टर इज ऑल्सो अ मीरा. बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर. दोनों सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट में पर्सन है वो दोनों कौन है? दे आर द सेम पर्सन. वो दोनों सेम है. इट्स मीन जो डॉक्टर वर्ड है वो मीरा को क्या कर रहा है? वो कंप्लीट कर रहा है. वो उसकी क्वालिफाइड बता रहा है, उसको उसके अंदर कुछ ऐड कर रहा है, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो ये हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट है ही सीम्स टू बी अ स्टूडियस बॉय. ही सब्जेक्ट, सीम्स आपकी वर्ब और टू बी अ स्टूडियस बॉय. तो ये आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज स्टूडियस बॉय इज ही एंड ही इज अ स्टूडियस बॉय. बोथ आर लिंक्ड विथ ईच अदर. जो इसके अंदर सब्जेक्ट है और जो प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट शो हो रहा है आपको, वो दोनों क्या है? सेम पर्सन है, वो डिफरेंट पर्सन नहीं है. तो इसलिए ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. Whereas in object complement, mom seems happy. यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या था? एक ही सब्जेक्ट था और जो हैप्पी वर्ड था वो एक्चुअली किसको कंप्लीट कर रहा है? प्रेडिकेट को कर रहा है. प्रेडिकेट को कंप्लीट कर रहा है और वर्ब को कंप्लीट कर रहा है. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द डेफिनेशन. व्हाट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट द सेंस ऑफ अ प्रेडिकेट. प्रेडिकेट के सेंस को कंप्लीट करता है एंड टेल समथिंग मोर अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ये हमारी वर्ब है, इसके बारे में कुछ और बता रहा है वो. क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्लियर?
Now our next topic is kinds of sentences. Already you have learned the same topic in your previous class that sentences are of 4 types. First one is assertive sentence. What is this? An assertive sentence makes a statement. It is also known as a declarative sentence. An assertive sentence begins with the capital letter and ends with the full stop. जब किसी भी सेंटेंस में हमें कोई सिर्फ स्टेटमेंट करनी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल एक सेंटेंस मेकिंग करना है और वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मैंगोज इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस. इट इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट. इट इज़ नॉट रेनिंग. दिस वन इज योर नेगेटिव सेंटेंस. क्लियर? Next one is your interrogative sentence. An interrogative sentence always asks question. It is also of 2 types, yes or no question and WH question. Can you swim? Yes ma'am. Can you swim? No ma'am. So this is all. This can be included in yes or no question. And next category is WH questions. Where did you go yesterday? Who is your favorite writer? This is also a WH question. Clear? So this is your interrogative sentence. And third one is your imperative sentence. Imperative sentence. What is imperative sentence? A sentence that gives a command or an order, makes a request or gives advice is called an इम्पेरेटिव सेंटेंस. जब किसी भी सेंटेंस के थ्रू आप कोई कमांड करते हो, किसी को ऑर्डर देते हो, कोई पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हो, तो दिस ऑल आर सेंटेंसेस इंक्लूड इन द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. सपोज गो अवे, इट्स अ ऑर्डर, सो इट इज ऑल्सो इम्पेरेटिव सेंटेंस. प्लीज क्लोज द विंडो, आई मेक अ रिक्वेस्ट, देन इट इज ऑल्सो इम्पेरेटिव सेंटेंस. स्टडी वेल, आई एम गिविंग यू एडवाइस टू डू स्टडी वेल. दिस इज ऑल्सो इंक्लूड इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस. Clear? And last is our exclamatory sentence. A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. A sentence that expresses strong feeling. Sometimes क्या होता है कि कभी कभी हमने किसी चीज़ को देखा, हमने बोला what a disgusting, how disgusting. तो ये सारे सेंटेंस किस में आएंगे? एक्सक्लामेटरी में. और किसी चीज़ को देख के आपको ने बोला वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज दिस. तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो मैंने अभी बोले वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एंड इज ऑलवेज एंड्स विद द एक्सक्लामेशन मार्क लाइक दिस. क्लियर? नाउ कम्स टू द एक्सरसाइज पार्ट. दिस इज योर practice sheets from your grammar book. I am going to just give you 1 or 2 solution for this, and remaining will be done by yourself. Rearrange these words and phrases to form sentences as directed. Use capital letters and the correct punctuation mark. Clear? These are the actually phrases. For the biscuits, cake, Shobit and office party has ordered. These all are phrases. You make a sentence meaningful by using these phrases. So I have done this one for you. First of all, Shobit. Shobit is your subject. After subject you have to place verb has order. Then your object, cake and biscuits. Then complementary for the party. Shobit has ordered cake and biscuits for the party. This one is your solution. So next one is done for you. The printing press editors took to see they the in assertive sentence. इसको आपने स्टेटमेंट के अंदर चेंज करना है. नेक्स्ट को आपने एक्सक्लामेटिव में, फिर इंटेरोगेटिव में, फिर इम्पेरेटिव में. ट्राई टू डू दिस बाय योर. क्लियर? नेक्स्ट वन इज योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. समटाइम्स आपको क्या गिवन होता है? कोई सेंटेंस गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हाउ स्वीट द सॉन्ग इज. दिस वन इज योर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. अगर हमने इसी सेंटेंस को असर्टिव यानी स्टेटमेंट में या अफर्मेटिव में चेंज करना है तो उसको कैसे चेंज करेंगे?
बट द मीनिंग विल बी रिमेन सेम. मीनिंग जो आपका चेंज नहीं होना चाहिए, इट विल रिमेन सेम इन बोथ द सेंटेंस. हाउ स्वीट द सॉन्ग इज. द सॉन्ग इज वेरी स्वीट. द मीनिंग ऑफ बोथ द सेंटेंस इज सेम. ही डिड द वर्क. ही डिड द वर्क. अफर्मेटिव कि उसने सारा काम किया. ही डिड द वर्क. इसको लेकिन जब उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे हम, he did not fail to do the work. This one is one negative. जिसके अंदर आपको चेंज करने के लिए बोला गया हो, आपको उसी में चेंज करना है. अगर अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है तो दैट इट्स मीन कि इट्स मीनिंग विल बी चेंज. अदरवाइज इन रेस्ट ऑफ द केसेस द मीनिंग विल नॉट बी चेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल, ही रिजेक्टेड ऑल आवर प्रपोजल्स. टू नेगेटिव में इसको हमने चेंज करना है. ओके. He did not accept any of our proposals. He did not accept any of our proposals. Next one is to think we should meet again. This one is your exclamatory sentence. इसको किस में चेंज करना है? Assertive में. I think we should meet again. At last, full stop. Next one is you should not break rules. Imperative. Can you order command? Don't break the rules. Don't break the rules. Clear? So this is your exercise for practice. I am giving you PDF for the full chapter at the end of this video. So solve it by your own. Next one is identify the types of these sentences. Then ask a WH question or a yes or no question in this sentence. क्लियर. आपको इसमें WH क्वेश्चन से कोई एक आपको क्रिएट करना है जिस, या फिर यस और नो वाला क्रिएट करना है. आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर यू. नो वन कैन टोलरेट दिस काइंड ऑफ अपाथी. नो वन कैन टोलरेट दिस काइंड ऑफ अपाथी. इसको यस और नो में आपको चेंज करना है. तो मैंने क्या लिखूंगी? कैन एनी वन टोलरेट दिस काइंड ऑफ अपाथी. कैन एनी वन टोलरेट दिस काइंड ऑफ अपाथी. रामू कुड हियर हिज मोबाइल फोन रिंगिंग. इसको किस में चेंज करना है? कन्वर्ट इनटू WH क्वेश्चन. वेयर कुड रामू हियर हिज मोबाइल फोन. वेयर कुड रामू हियर हिज मोबाइल फोन. सो दिस वन आई हैव डन फॉर यू एंड द रेस्ट ऑफ द विल डन बाय यू. Now we are going to discuss your exercise. Look at the excerpts from some famous poems. Identify the subject and the subject word as well as its attribute in each sentence. Underline the predicates. Okay. First example is given for you. For many children are very poor. आपको इसमें क्या find out करना है? You have to find out subject, attribute and the predicate. Subject word or attribute is the same thing. Clear? For many children are very poor. So here, to whom we are talked about? Children. So children is your subject. Are very poor is your predicate. And these words actually used for subject. For many. So this is your attribute. This is actually the adjective of the subject. So these are the for many is used as attribute. Next one is and the winter is hard to bear. Winter किसके बारे में बात हो रही है? Winter. So winter is your subject. Is hard to bear is your predicate and the. These two words are included in the attribute. Clear? So this one is your first exercise. Do it yourself, right? Now let's talk about the second exercise. Separate the subject and the predicate in these sentences. State whether the highlighted words and phrases act as attributes. आपको इसमें attributes बताना है. Adverbial qualification, direct object, indirect object, subjective complement and objective complement. Clear? The captain seems worried. What is worried here actually? Worried किसको बता रहा है? Seems. Seems को क्या हमारी verb.
द कैप्टन हमारा क्या हो गया, कैप्टन क्या हमारा सब्जेक्ट, सीम्स हमारा क्या है वर्ब। तो ये हमारी क्या होगी, वर्ब को क्या कर रहा है, वर्ब के अंदर कुछ और एडिशन किया गया है। द कैप्टन सीम्स वरीड, तो वरीड इज योर एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। द जर्नल केप्ट अस स्टैंडिंग, द जर्नल इज हेयर योर सब्जेक्ट, kept is your verb, us is your object, or you can say predicate. Us standing here means the journal kept us what, the journal यहाँ पे अलग पर्सन है, us अलग पर्सन है। जब सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों डिफरेंट पर्सन हो और उसके बाद जब प्रेडी आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद कोई अनदर वर्ड गिवन हो तो वो हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बिकॉज द जनरल केप्ट अस व्हाट, द जनरल केप्ट अस क्या क्या जनरल ने केप्ट अस स्टैंडिंग। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। माई फादर इज अ जर्नलिस्ट, फादर इज अ सब्जेक्ट, is a journalist is your predicate. And what is my hair, my hair is a attribute because father किसके है मेरे, additional information given here for the subject कि मेरे father, my father. Clear, तो here father my is used as here attribute. He became a doctor, he is a subject, became is your verb, a doctor is your predicate. But actually a doctor is what, already I have cleared one thing you कि whenever the subject and the person in the predicle is same, then both are used for one another, so it is your subject complement. He is a doctor and doctor is a he, all right, both are the same. तो ये जो डॉक्टर है वो किसको कंप्लीट कर रहा है, यानी ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, सो दीज आर एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर वेरी केयरफुली। After that, if you find any type of problem, just contact me on my WhatsApp number. I will mention you, I will clear you again. No problem at all. Clear? So feel free to ask me again without any hesitation. Have a good day.